Assalamu alaikum everyone. I am Arujasan from Zoology Department. Today I am here to discuss the topic advantages and disadvantages of sexual and asexual reproductive system. आज की हमारी वीडियो में इन कंटेंट्स को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पे है सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कहते हैं। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज इन ऑर्गेनिज्म दैट वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। In case of human, it include organs such as testes, ovaries, uterus and associated structures जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोड्यूसिंग एंड डिलीवरिंग गैमीट्स के लिए, फैसिलिटेट करते हैं फर्टिलाइजेशन को, प्रेगनेंसी को और चाइल्ड बर्थ को। अगर इसके एडवांटेजेस की बात करें तो नंबर 1 पे हमारे पास है जेनेटिक वेरिएशन। अब जेनेटिक वेरिएशन क्या है? किसी पॉपुलेशन के अंदर जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके डीएनए की सीक्वेंस के अंदर चेंज आना, उसमें डिफरेंस होना, इसे कहते हैं जेनेटिक वेरिएशन। वेरिएशन होती है जर्म सेल्स के अंदर, फॉर एग्जांपल स्पर्म्स एंड एग, एंड आल्सो इन ऑल अदर सेल्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलाउ करती है शफलिंग एंड रिकम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स फ्रॉम टू पेरेंट्स, लीडिंग टू द ऑफस्प्रिंग विद यूनिक कम्बिनेशन ऑफ ट्रेट्स। जेनेटिक वेरिएशन एसेंशियल होती है स्पीशीज़ के लिए ताकि वो अडेप्ट कर सकें चेंजिंग इन्वायरमेंट को, इवॉल्व हो सके ओवर टाइम। म्यूटेशन, द चेंजेस इन द सीक्वेंस ऑफ जीन इन डीएनए आर वन सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। इसका अनदर सोर्स क्या है? जीन फ्लो, मूवमेंट ऑफ जीन बिटवीन डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। फाइनली क्या है कि जेनेटिक वेरिएशन कैन बी रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ न्यू कम्बिनेशन ऑफ जीन्स। सेकेंड है एडेप्टेशन कि adaptation, it is a change in the structure, function or behavior by which a species individuals improve its chance of survival in a specific environment। कि किसी भी स्पेसिफिक इन्वायरमेंट के अंदर इंडिविजुअल अपने चांस ऑफ सर्वाइवल को इम्प्रूव करता है, इसके लिए अडेप्टेशन बहुत ज़रूरी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फैसिलिटेट द स्प्रेड ऑफ बेनिफिशियल जेनेटिक ट्रेट थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। Individuals with advantageous traits are more likely to successfully reproduce and pass those traits to the offspring, improving the species' adaptation to its environment। नंबर 3 पे है हमारे पास एलिमिनेशन ऑफ हार्मफुल म्यूटेशंस। अ जेनेटिक अल्ट्रेशन दैट इंक्रीजेज एन इंडिविजुअल ससेप्टिबिलिटी टू अ सर्टेन डिजीज और डिसऑर्डर। मोस्ट म्यूटेशन स्पेशली दोज विद फिनोटिपिक इफेक्ट के ऐसी म्यूटेशन जिनका फिनोटिपिक इफेक्ट होता है वो हार्मफुल है और इनको नेचुरल सिलेक्शन के जरिए रिमूव किया जा सकता है। फॉर दिस रीज़न अंडर नेचुरल सिलेक्शन एन ऑर्गेनिज्म विल इवॉल्व टू अ लोअर म्यूटेशन रेट। नंबर 4 पे एवोल्यूशनरी आर्म रेस। Sexual reproduction can drive an arm race between species as they evolve trait and behavior to compete for mates and evade predators. This dynamic interaction contribute to the ongoing diversification and evolution of species. Overall कहें तो सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सर्व एज पावरफुल इंजन के तौर पे काम करता है फॉर जनरेटिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी, फैसिलिटेटिंग एडेप्टेशन एंड डिराइविंग द एवोल्यूशनरी प्रोसेस फॉरवर्ड। Sexual reproductive system leads to the genetic variation through the processes of meiosis and fertilization। meiosis क्या है कि सेल डिवीजन की एक ऐसी टाइप जिसके अंदर सिंगल सेल डिवाइड करता है, टू सेल बनाता है और आगे से टू सेल डिवाइड होकर 4 हैप्लोडॉटल सेल बनाएंगे। इन सेल्स को 6 सेल्स और गैमीट्स का नेम देते हैं। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? गैमीट्स फ्यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्पर्म एंड एग मिलते हैं और जाइगोट बनाते हैं। During fertilization, two haploid gametes combine to restore the diploid number of chromosome in the zygote. This process brings together genetic material from two different individuals, contributing to the genetic diversity. Overall, meiosis generate करता है genetic variations को within individuals' gametes, while fertilization combines genetic material from two individuals, resulting in offspring with unique genetic combinations। अगला हमारा टॉपिक है डिसएडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नंबर 1 पे हमारे पास एसटीडीज को कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, जिसमें आ जाते हैं एचआईवी, एड्स, हर्पेस, गुनेरा एट्सेट्रा। गुनेरा क्या है कि इट इज़ काज बाय ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम जिसका नेम है निसीरिया गुनेरा, मेनली अफेक्ट द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। Newborn infants may acquire serious eye infection if they pass through the infected birth canal. It is highly contagious through sexual contact। नंबर 3 पे हमारे पास सिफिलिस। इट इज़ कॉज बाय स्पायरोजीटी ट्रिपोनिमा पैलिडम। इट डैमेजेस द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, आईज, बोन्स, जॉइंट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हार्ट एंड स्किन। सेक्शुअल कॉन्टैक्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ इट्स डिसिमिनेशन। इम्पोर्टेंस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी, इसमें नंबर 1 पे हमारे पास रेजिस्टेंट टू डिजीज एंड पेस्ट। A genetically diverse population is less likely to be wiped out by a disease or pest. If a particular disease targets individuals with a specific genetic makeup, those with different genetic background may be resistant and able to survive, preserving the population.
Number 2 पे है genital herpes. It is caused by a herpes simplex type 2 virus, most frequently transmitted by sexually contact, causing infection of the genitalia. It produces genital soreness, ulcers in the infected area. In infected pregnant women, virus can be transmitted to infant during birth, causing damage to the eye and central nervous system of the infant. Number 3 पे है AIDS, acquired immune deficiency syndrome. The above dreadful sexual disease can be controlled and prevented by avoiding sexual contact with a carrier or diseased person and adopting the hygienic conditions. The treatment involved medications for a long period except AIDS at present. Number 4 पे है sexual dysfunction. Sexual dysfunction is a problem that can happen during any phase of sexual response cycle. ये prevent करता है you from experiences satisfaction from sexual activity. Sexual response cycle traditionally includes excitement and resolutions. Number 5 पे है social and cultural stigma. Societal norms, attitudes towards sexuality can create stigma, shame and discriminations, particularly for individuals who cannot conform to traditional expectations. नेक्स्ट है हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ asexual reproductive system. इसमें क्या है कि mates are not required, process of reproduction is rapid, enormous number of organism can be produced in very less time, positive genetic influence passed on to the species. अगर इसके एडवांटेजेस की बात करें तो नंबर 1 पे हमारे पास एफिशिएंसी. asexual reproduction does not require the complex process of finding a mate, courtship और mating rituals. ये टाइम और एनर्जी को सेव करता है. रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ में क्या है कि a single individual can reproduce quickly without the need for a partner, leading to the exponential population growth under favorable conditions. नंबर 3 पे है जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी. ऑफस्प्रिंग्स अपने पेरेंट के जैसे होते हैं, जेनेटिकली मेकअप उनका पेरेंट्स के जैसा होगा, इंश्योरिंग डिजायरेबल ट्रेट्स आर प्रिजर्व्ड इन द पॉपुलेशन. नंबर 4 पे अडेप्टेशन टू स्टेबल इन्वायरमेंट. In stable environment where little changes occurs, asexual reproduction can be advantageous as it maintains the successful genetic traits without introducing variability. Number 5 पे conservation of energy. Asexual reproduction avoid the energy expenditure associated with producing gametes and attracting mates, allowing organism to allocate more resources to growth and survival. अगर इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो नंबर 1 पे है लैक ऑफ डाइवर्सिटी. सिंस द ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, they are more susceptible to the same disease and nutrient deficiencies as in the parents. कि अगर ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट्स के जैसे हैं जेनेटिक मेकअप में, तो जो पेरेंट्स के अंदर डिजीजेस वगैरह होंगी, जिस चीज़ की डेफिशिएंसी होगी, वो सेम उनके आगे ऑफस्प्रिंग में भी होगी. ऑल द नेगेटिव म्यूटेशन परसिस्ट फॉर जनरेशन. Since only one organism is involved, the diversity among organisms is limited. They are unable to adapt to the changing environment. A single change in the environment would eliminate the entire species. Number 2 पे accumulation of mutations. Without the genetic recombination that occurs during sexual reproduction, mutations can accumulate more easily in asexual organism, potentially leading to the decreased fitness over time. Number 3 पे limited adaptation. Asexual reproduction does not allow for the shuffling of genes that occur during sexual reproduction, which can limit an organism's ability to adapt to changing environment. Number 4 पे lack of evolutionary flexibility. Asexual reproduction can hinder the ability of a species to evolve and adapt to new environmental challenges as it relies slowly on existing genetic variation. Overall देखा जाए तो asexual reproduction can be advantageous in certain contexts. It also comes with significant drawbacks that can limit the long-term success and evolutionary potential of a species. आई होप गाइस आप लोगों को आज की वीडियो समझ आ गई होगी. अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू.